Today I'm going to revise civics and we will do quick revision of 4 chapters. First of all, chapter Constitution. So in this chapter, you have to learn questions like this. What is Constitution? You know it now very well. Book of law according to which country is governed. Then why do we need Constitution? You also know it very well कि हमें Constitution क्यों चाहिए? Constitution gives limitations to the powers of government. Constitution does not allow government to become dictatorial. Constitution make it clear which organ of the government has to do which work. ठीक है? It provides us 6 fundamental rights. It gives protection to the people who are in minority. It protects the people from the domination of the majority. So it is a rule of it. आप ऐसे भी कह सकते हो, it's a book of law according to which our country is governed. So you can write these points. Why do we need Constitution? Features of Indian Constitution. No, which are the features? First, it is written and lengthiest constitution in the world because हम खुद ही कहते हैं 448 articles, whereas US के हम कहते हैं सिर्फ 7. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 448 आर्टिकल्स, so it's the lengthiest constitution in the world. फिर हम कहते हैं it's bag of borrowing because while framing our famous read the constitution of various countries and adopted the best features. For example, idea of socialism taken from Russia. And then it makes India a federal country. It makes India a secular country. It provides us parliamentary form of government. Next, it provides 6 fundamental rights to the citizens. And on the other hand, we are also saying it's a living document because it is partly rigid, partly flexible. Changes can be made in the constitution, but to make changes is not an easy process. So we can say it's a living document. अब Constitution के ही features को किसी को explain करना है. For example, in the book, it's given federalism, then parliamentary form of government, then separation of power, and then 6 fundamental rights. Federalism में आप बताओगे 2 or more levels of government. In India, India is a federal country because in India we have central, state, and local government. Then parliamentary में आप बताओगे in India we have parliamentary form of government. Council of Ministers is always answerable to Parliament. If Parliament passes vote of no confidence against Council of Ministers, then Prime Minister with this team has to resign. Separation of power में आप बताओगे powers of organs are separated by the Constitution. For example, legislature has to make laws, executive implement those laws, judiciary check whether the laws are followed by people or not, and gives punishments to the law violators. Next is fundamental rights. Constitution provides us 6 fundamental rights. And first is right to equality, right to freedom. Then आप कह सकते हो right against exploitation. मैं serial order में बोल रही हूँ. Right, आप ऐसे ही लर्न रखो, आपको 9th में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. Right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right. Last is right to constitutional remedies. So all the rights are given in the book and book में explain भी किया हुआ है इनको. No need to learn from the book. You can write the answers according to your choice. For example, right to equality आता है तो आप अपने वे से लिखो. By this right, all are equal before law. There is no discrimination on the basis of caste, religion, caste, language, ठीक है, color, gender. फिर आप बताओ कि untouchability is banned by law by Article 17 of the Constitution. Equal job opportunities are given to all. Everyone can use public property. तो ये आप लिख सकते हो right to equality. Right to freedom में आप बताओगे it's a cluster of other rights because this right has given 6 kind of freedom to the citizens. अब आपको 6 kind of freedom लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बीच में से लिख के कुछ भी बता सकते हो etc. For example, freedom of आप कह सकते हो trade, freedom of occupation, freedom to live in any part of the country,
फ्रीडम टू टेक पार्ट इन प्रोसेशंस, ठीक है, तो इस वे से आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एनी। तो फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बाय दिस राइट टू इविल्स आर बैंड। विच आर द टू इविल्स? चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। तो आपने उनके बारे में बताना है। चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन बिलो 14 are not allowed to work in factories or in mines. Government has provided free education for them. फिर bonded labor. Bonded labor में आप कहोगे कि masters cannot force the slaves or servants to do work freely for them. Servant से free labor नहीं करवा सकते, ठीक है। Next is right to freedom of religion. This right make India a secular country. By this right, people can follow any religion and propagate it. There is no discrimination on the basis of religion. Next, cultural and educational right. By this right, people can follow their culture and speak their language. Different religious communities can set up their educational institutions in India, and admission of children in that institutions cannot be denied on the basis of religion and on the basis of language. Now, is it clear? Next is right to constitutional remedies. This right is the protector of other fundamental rights. तो हम तो यहाँ तक भी कहते हैं it's a hero right. Without this right, other rights are zero. Because by this right, person can go to court and court issue writs. Writs issue, WRITS, writs. By this, punishment is given to the violator and compensation is given to the victims. So these are the 6 fundamental rights. So this chapter is clear with this. Next, secularism. सेक्युलरिज्म का आधा तो मैंने इसी में बोल दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म में सेम वही है। हाउ कैन यू से इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो स्टेट रिलीजन. In India, all religion are treated equally. Equal respect is given to all religion. People can follow any religion and propagate it. ठीक है। अगर कोई रिलीजियस कुछ भी इंडिया में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई भी हम कहें कि कम्युनिटी के लोग, जैसे हम आपकी बुक में दिया हुआ है इन्फेंटिसाइड, इफ वो फॉलो करती है हिंदू कम्युनिटी एंड बाय सेइंग कि ये तो हमारे रिलीजन में है, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन दिस, इन सच टाइप ऑफ मैटर्स. यस, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन बिकॉज राइट टू लाइफ इज गिवन टू ऑल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और किसी को राइट नहीं है किसी को मारने का, क्योंकि इन्फेंटिसाइड में फीमेल चाइल्ड को मारा जाता है आफ्टर द बर्थ. ठीक है, तो नो राइट इज गिवन टू एनीवन टू किल एनीवन. किसी के पास ऐसा राइट नहीं है कि दूसरे को मार दे. तो इस इट मींस इन सच मैटर्स गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. कहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती? यूएसए में. कहाँ पे इंटरवीन करती है? इंडिया में. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अगर हम कहें कि सिख कम्युनिटी, जब गवर्नमेंट ने हेलमेट पहनने कंपलसरी किए, क्या उन्होंने सिख कम्युनिटी को कंपल्शन दी इस बात की? नो, क्योंकि उनकी टर्बन को उन्होंने कंसिडर किया. और सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते. दे कैन वेयर देयर टर्बन्स इन प्लेस ऑफ हेलमेट. तो इट मींस गवर्नमेंट दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करती है. ठीक. नेक्स्ट, जुडिशरी. India is a we are living in a democratic country. India is the largest democracy in the world, and one of the most important feature of democracy is independent judiciary. In India, judiciary is totally independent. Because question आ जाए, why? How can you say judiciary is independent? तो आपने बताना है कि judges can give their decisions without any outer pressure. Judiciary is not under the control of legislature, executive, prime minister, president. किसके अंडर नहीं है. Judges can give their decisions in an independent way without any outer pressure. Functioning of judiciary is not discussed in the parliament. Once appointed as judge of the court, it is not easy to remove the person. To remove judges, impeachment method is followed, that is followed to remove the president of the country. So in this way, we can say in our country, judiciary is totally independent. You have to write these points to prove in India, judiciary is independent. अब structure of judiciary अगर पूछा जाए, तो at the top there is Supreme Court.
Middle, there is high court. At the lowest level, there are district courts. First of all, person go to district courts. District courts are further divided into two parts: civil courts, criminal courts. Civil cases go to civil courts, criminal cases go to criminal courts. अब सिविल केसेस होते कौन से? दैट डील्स विद प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, ये सारे. क्रिमिनल केसेस सच एज मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये सब कौन से आते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने फीचर्स किए. देन नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म. यू हैव डन जुडिशरी, वी आर डूइंग जुडिशरी में आपने यही बताया, इट्स इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर. एट द टॉप देयर इज सुप्रीम कोर्ट, middle there is high courts, different states have their own courts, and sometimes two states have combined court. For example, Punjab and Haryana, and Punjab and Haryana have common high court, and that court is also the common high court of the Union Territory of Chandigarh. Is it clear? Next, अब इसके बाद आ जाती है आपकी lower courts, civil and criminal. Civil cases such as marriage, divorce, property, adoption, etc. Criminal cases, theft, murder, kidnapping. Civil cases can be handled out of the court, can be sold outside the court with mutual understanding. Criminal cases cannot be sold outside the court. They are sold only in the courts. So this is about judiciary. How can you say judiciary is independent? Structure of judiciary and functions of judiciary. What type of functions judiciary performs? तो इसमें आप बताओगे, first of all, it solves disputes of the people. Then solves disputes between central and state government. Solves disputes between two or more states. Then it is the guardian of our constitution. It is the protector of our fundamental rights. Is it clear? You can write, it is the legal advisor of president. It is the legal advisor of president. Listen again. Functions of judiciary: solves disputes of the people, give punishments to the law violators. Any functions you can write. Next, solves disputes between central and state government. Solves disputes between two or more states. It is the protector of our fundamental rights. It is the guardian of our constitution. It is the legal advisor of the president. No functions of judiciary are clear. Next, parliament. Parliament में आप बताओगे National Assembly of Elected Representatives, highest forum of debates and discussions. ठीक है, ये अगर पार्लियामेंट के बारे में पूछे. इन इंडिया वी आर हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर. बाईकैमरल आपको वर्ड लर्न करना है. हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. इन इंडिया वी आर हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. डिफ्रेंशिएट अगर आ जाए लोकसभा एंड राज्यसभा. इट इज द लोअर हाउस. देखो कितना इजी करके मैं बोलती हूँ. इट इज द लोअर हाउस, एल से लोअर. इट इज द अपर हाउस. इट इज द हाउस ऑफ पीपल. लोग है ना, लोग कौन होते हैं? पीपल. इट इज द लोअर हाउस, इट इज द अपर हाउस. इट इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज द हाउस ऑफ काउंसिल्स. COUNCILS. Next, people who are at the age of 25 or above can contest for Lok Sabha elections. People who are at the age of 30 can contest for Rajya Sabha elections. Speaker is the head. Vice President is the chairman of Rajya Sabha. ठीक, इधर आप बताओगे tenure is 5 years. उधर आप बताओगे 1/3 members are retired after every 2 years. खुद कैसे भी बताओ. tenure 6 years भी लिख सकते हो. 6 years भी लिख सकते हो. Number of member never exceed 550. 550 से ज्यादा कभी members नहीं होते. At present number of members 543. Number of members never exceed 550. At present there are 543 members. Number of members never exceed 250.
2 members are nominated by president from Anglo-Indian community. 12 members, 12 बोला मैंने, 1 to 12. 12 members are nominated by president from different fields such as math, science, art, literature, theater, etc. Art आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? It means 238 members are elected indirectly plus 12 are nominated by president. Either members are elected directly by people. Members are elected directly by people through elections. किसकी elections होती हैं? Members are elected directly by people. उनको हम लोग elect नहीं करते. Member of electoral college elected them. राज्यसभा के members को कौन elect करता है? Members of electoral college. They are elected by the members of electoral college. ठीक है? So this you can write about how Lok Sabha is differ from Rajya Sabha, या differentiate Lok Sabha and Rajya Sabha. Next is parliamentary. How can you say कि parliament के functions भी तो आ सकते हैं आपको? Write the functions of parliament. तो इसमें आप क्या बताओगे? Largest law making body in India. ठीक है? Parliament makes law on the subjects union list, state list, concurrent list. Residuary powers are enjoyed by Parliament. It is the annual budget is prepared by Parliament. Annual budget is prepared by. It controls national finances of the country. Government cannot spend even a single penny without the permission of the Parliament. Parliament take parts in the elections of President and Vice President. It is the highest forum of debates and discussions. Parliament के functions में आप ये भी कह सकते हो, it has full control over executive. Parliament has full control over executive. And if Parliament passes vote of no confidence against Council of Ministers, then Prime Minister with his team, उसकी team कौन सी हुई? Council of Ministers. Then Prime Minister with his team has to resign immediately. If Parliament passes vote of no confidence, no, functions की जगह अगर वो आपको powers of Parliament लिख के दे देते हैं तब भी बात सेम है. Powers और functions एक ही बात है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम तो functions करके आए हैं, हमें powers आ गई. Write the powers of Parliament, एक ही बात है, ठीक है? Next, इसी में ही आपने कहीं पे पढ़ा कोलिशन गवर्नमेंट. नो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन का मीनिंग बताना है. तो इसमें आप बताओगे आफ्टर इलेक्शंस द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स बट कैन नॉट शो मेजॉरिटी, it has to join its hands with other political parties to show majority and to form government. That is known as coalition government. अब एक मिनट, मैंने खुद बोला 543. अगर कोई पार्टी फॉर एग्जांपल कांग्रेस को 200 सीट्स मिल गई बट वो मेजोरिटी तो नहीं ना शो की, उसको तो हाफ सीट्स मिली नहीं, पर वो सबसे ज्यादा सीट्स लेके गई, इमेजिन. तो इट मीन्स कांग्रेस इज द विनर बट मेजोरिटी नहीं शो कर पाई. देन कांग्रेस हैज टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज to show majority and to form government. Such type of government is called coalition government. At present हमारी कंट्री में coalition government नहीं है, ठीक है? बट कांग्रेस का जब रूल था ना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर, then in India we were having coalition government. तब coalition का मीनिंग आया आफ्टर इलेक्शन पार्टी दैट विंस, जो पार्टी जीत जाती है बट कैनॉट शो इट्स मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर पाई, देन party has to join hands with other political parties to show majority and to form government. This type of government is called, क्या कहेंगे ऐसी government को? Coalition government. क्या कहेंगे? Coalition government. Alliance तो आता है जब पार्टी अपना hand join करती है दूसरी पार्टी के साथ to contest election. For example, पंजाब में बीजेपी एंड अकाली अलायंस अब नहीं है ना, पहले था. बीजेपी और अकाली पार्टी ने हैंड ज्वाइन किए थे तो उसको कहा गया अलायंस. दोनों ने अपने हैंड ज्वाइन किए टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि उनको होता है कि हैंड ज्वाइन करने से वी विल विन द इलेक्शंस. द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग
मेन एम क्या होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस? टू विन द इलेक्शंस। मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शंस। मेन एम तो यही लेके चलती है ना वो। तो कई बार वो अलायंस भी करते हैं, आप ज्वाइन करते हैं हैंड्स दूसरी पार्टीज के साथ। तो बिफोर इलेक्शंस हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। पंजाब में उसकी एग्जांपल थी कौन सी पार्टीज? अकाली एंड बीजेपी, अकाली एंड